Let's understand the mechanism of action of cholera toxin, abbreviated as CT, and this toxin is also known as choleragen, that is cholera generating toxin. Okay? So this toxin is a heat labile enterotoxin. It is going to act on the enterocytes. Now this toxin, guys, is made up of two subunits, A subunit and B subunit. A stands for active and B stands for binding. So as the name implies, it is the B subunit which is going to bind to the receptor decorated on the surface of the enterocytes. क्या है इस receptor का नाम? The name of the receptor is GM1 ganglioside receptor. ठीक है. Now B stands for binding, as I said, and B से एक और meaning भी है. B means bahar. Bahar is a Hindi word which in English means outside. So B subunit is going to bind to the receptor and also it is going to stay outside the cell. ये अंदर नहीं जाएगा. लेकिन इसके सर पे जो बैठा है, that is the A subunit, the active subunit, is going to make its grand entry into the cytoplasm of the cell, after which all hell is going to break loose. On purpose I have used red ink to draw the A subunit क्योंकि ये बहुत ही cunning है, shrewd है. Why? It is going to cast its evil eye onto the friendship of two best friends who are there in the cytoplasm. And who are these best friends? NAD and ADP ribose. For no reason whatsoever, A subunit is going to break their friendship apart, and NAD and ADP ribose therefore will go their separate ways. जैसे हर इंसान का नेचर अलग होता है, वैसे यहाँ पे NAD एंड ADP राइबोस का जो नेचर है ना, वो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट NAD जो है वो इमोशनली स्टेबल है, उसको एंड वो प्रैक्टिकल भी है काफी. तो उसको लग रहा है कि चलो ये दोस्ती यहीं तक लिखी थी, अब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज इनडिफरेंट. वो ज्यादा कुछ रोना धोना नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा लाइफ में. बट प्रॉब्लम इज विद ADP राइबोस जो कि इमोशनली काफी लेबाइल है, ये काफी उदास है, इसके आंसू टपक रहे हैं. अगर दुनिया में खराब लोग हैं, जैसे कि ये सब यूनिट हो गया, अच्छे लोग भी हैं, कम हैं लेकिन हैं. एंड आई बिलीव उसी अच्छाई पे दुनिया टिकी हुई है, दुनिया कायम है. और इसी प्रकार का एक अच्छा प्राणी, एक अच्छा मॉलिक्यूल जो हमें दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, वो है ये पिंक कलर का मॉलिक्यूल, दैट इज GS, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन. तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन इज वेरी वेरी काइंड हार्टेड. ये क्योंकि आंसू पोंछ रहा है ADP राइबोस के, आप देख रहे हो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन ने एक कोलैबोरेशन कर ली ADP राइबोस के साथ, ये अटैच हो गया ADP राइबोस के साथ. एंड दिस अटैचमेंट ऑफ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन विद ADP राइबोस is described how in books? It is described by the fancy description ADP ribosylation of GS protein. It is nothing but attachment of ADP ribose to G stimulatory protein. यही मतलब है इस fancy से description का. So together अब ये दोनों पिंक और ऑरेंजिश फेलोज साथ में आ गए, इनकी अब नई दोस्ती डेवलप हो रही है. अब ये दोनों इतने हाइपर हैं, ये जाके एडिनाइलेट साइक्लेस को भी हाइपर करा देंगे, मतलब उसको एक्टिवेट करा देंगे. तो एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम इज देयर इन द साइटोप्लाज्म, जो कि एक्टिवेट हो जाएगा बाय via the influence of the G stimulatory protein, which in turn is attached to ADP ribose. तो जब एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट ATP into cyclic AMP. So intracellular concentration of cyclic AMP is going to increase, which is going to result in what? Secretory diarrhea. Gut lumen का जो sodium है, that is not going to be absorbed, and chloride is going to be secreted, and water is going to follow passively to maintain the osmolarity. So we end up with what? Secretory diarrhea. This is the mechanism of action of cholera toxin, that is choleragen, abbreviated as CT. Please remember the exact same mechanism of action is encountered with the labile toxin of ETEC, that is enterotoxigenic E. coli. But why we are so afraid of cholera? We are afraid of cholera because cholera toxin is 100 to 1000 times more potent than the labile toxin of ETEC. Therefore, the patient can very rapidly lose fluid and electrolytes, and if not treated in time, the patient can land up with shock and its complications. Please remember this. Okay?